बेटा आज हम लोग एक ट्रिकी क्वेश्चन समझेंगे। ये एक हैवी रोलर है विच इज टू बी रेज्ड ओवर दिस पेवमेंट एक्स वाई। इसको रोल करके ऊपर चढ़ाना है। क्वेश्चन इज वेयर शुड द फोर्स बी exerted on this roller and in which direction so that this roller can move up over this pavement। तो इसको पहले हम एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में करके देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। Here we are having a roller. Axle of this roller is passing through this point. This roller is going to rotate about this point. I will select a point which is diametrically opposite to this point, and then I will apply a force in upward direction. Just check it out. The force is applied here and in upward direction, and the condition is that there should be no friction between the ball and the pavement. Although we are having a glass slab as a pavement, so there is less friction between the two, but still I can show you that the roller rises up when we apply a force at a point which is diametrically opposite to the point about which this roller is going to rotate. I'm holding this glass slab so that due to my force this glass slab is not fixed. Just pay attention. My point of application is this one, but the force is in upward direction, right? Now I can show the force vector with help of an arrow like this. The tail is at the point of application of the force and arrow is showing upward direction of the force. And also I can show the force like this. That is, the arrow is touching the point of application of the force, but the arrow is still in upward direction, so don't get confused. So children, we can show the force by applying the force like this. The tail is at the point of application of the force and the arrow is showing that it is in upward direction. And I can show this like this also. I will show the arrowhead at the point of application and direction is still in the upward direction. Now calculation, and why we selected this point to apply the force, because force here is at the maximum distance from the point of rotation. The roller is rotating about this point, so at the maximum possible distance I am applying my force so that the maximum torque which is possible is applied and this roller is easily rotating in clockwise direction in order to move up the pavement XY. I will write my answer that force is applied at point P in upward direction to provide maximum possible torque. Then I will show the torque, what is the calculation, and it is producing clockwise torque. This will be my complete answer. In case you are given that a force is applied at this point, I will take this point as Q and in this direction. And then question is asking, if same force is applied at the two places, what is the torque produced by this force and what is the torque produced by this force? Compare the two torques. So you can understand that if force is applied at Q, then point of rotation is X. If you see the level of X, it is shown by this line, and perpendicular distance from X to F is R. So torque of the force which is applied at Q is force into perpendicular distance of F from the point of rotation. But the force which is applied at point P, that force is 2r distance away from the point of rotation. So torque of this force is F into 2r. We can see that torque of the force applied at P is twice the torque of the force applied at point Q. Similarly, the second question I want to discuss is, in this question, a force is applied at point A and other force is applied at point B. Both the forces are of same magnitude, but this force is in downward direction and this force is in upward direction. Question is asking you find resultant moment of forces, the two, about, first they are asking you to
calculate movement about A, then about B, and then about O. Carefully understand because this question will clear all the concepts of torque. First, I will calculate the torque about A. See, F1 is passing through the A itself. So, perpendicular distance of F1 from A will be 0. While perpendicular distance of F2, लाइन ऑफ एक्शन से A की डिस्टेंस लेंगे तो F2 की डिस्टेंस A से है 50 सेंटीमीटर. तो F2 का टॉर्क हो जाएगा F2 इंटू 0.50 मीटर, दैट इज 5 न्यूटन मीटर. देन आई आस्क यू, हमेशा तुमको अगर ये जानना है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो आप अपना पेन या पेंसिल यूज करिए. ए पर ए के अबाउट आपको मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो हमने पेन को ऐसे रखा और यहां से पकड़ लिया. अब F2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम इसको अपने पेन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और तुम देख सकते हो कि ये क्लॉकवाइज घूमने लगा. तो इसलिए हमारा जो रिजल्टेंट मूवमेंट है वो मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन ये है. इसी तरह से अगर हमें B के अबाउट निकालना है तो फिर हम F1 की B पॉइंट से डिस्टेंस देखेंगे. लाइन ऑफ एक्शन ये है और लाइन ऑफ एक्शन B से 50 सेंटीमीटर दूर है. तो F1 इंटू डिस्टेंस, जबकि F2 तो B से पास ही हो रहा है, तो F2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस B से 0 हो गई. तो इस तरीके से F2 का टॉर्क हो गया 0. जो फोर्स पॉइंट ऑफ रोटेशन या जिसके अबाउट हमें मूवमेंट कैलकुलेट करना है उसी पॉइंट से पास होगा, उसका टॉर्क हमेशा 0 आएगा. तो ये 0 हो गया और ये कैलकुलेट करके फिर से 5 न्यूटन मीटर, और जैसे मैंने तरीका बताया था क्लॉकवाइज आ जाएगा. इसके बाद टॉर्क अबाउट O. यहां पर तुम डायग्राम को फिर से एक बार चेक करो. O से F2 की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है और F1 की 25 सेंटीमीटर. अगर मैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देखना चाहूं तो मैंने पेन को रखा और ये देखो मैंने इसको यहां से पकड़ लिया O से, और फिर मैंने फोर्स अप्लाई किया जिस डायरेक्शन में F1 लग रहा है, यानी ऊपर की ओर. इसको मैं यहाँ पे पूरा दिखाती हूँ. ये है O और ये है मेरा फोर्स, ये क्लॉकवाइज घूमेगा. तो टॉर्क ऑफ F1 इज क्लॉकवाइज अबाउट O. सिमिलरली मैंने पेन को फिर इस तरह घुमा लिया. अब O इधर है और फोर्स इधर है और नीचे की ओर लग रहा है F2. तो देखो पेन फिर से क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब F1 की वजह से भी पेन क्लॉकवाइज घूमा और F2 की वजह से भी, तो दोनों ही फोर्सेस क्लॉकवाइज हैं. तो कैलकुलेशन के समय दोनों ही फोर्सेस सेम साइन के साथ आप माइनस लगा सकते हैं यहाँ पर आगे, अगर आप क्लॉकवाइज को माइनस लगाकर दिखाना चाहें, या आप क्लॉकवाइज इस तरह से लिख दें. तो F1 इंटू डिस्टेंस ऑफ F1 फ्रॉम O, F2 इंटू डिस्टेंस ऑफ F2 फ्रॉम O, और आपको फिर से 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पर इस बार अबाउट पॉइंट O. क्वेश्चन आपको किस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालने को कह रहा है, अगर वो स्पेसिफाई किया हो तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अगर आप मुझसे फिजिक्स ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं.